Good evening, everyone. How are you all? We can wait for a few minutes. I think still students are joining. Then we can start. So I hope most of the students have today joined the session with the laptop or computer with a good internet connection. लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है क्या सभी ने सेशन आज का, या लैपटॉप या कंप्यूटर या फोन से आज? Okay, so now we can start the session. Okay, so in the previous session, we saw that what we are going to develop, brief about the coding, okay, and the structure of the next day session. So आज के सेशन में जैसे मैंने बताया था कि किसी ने जैसे ये सेशन को कंप्लीट करने के लिए 15 डेज में, आई मीन 15 डेज का सेशन है, उसे कंप्लीट करने के लिए आप लोग को पाइथन और पाइगेम इंस्टॉल करना है एज अ रिक्वायरमेंट, जो कंपलसरी है क्योंकि वही हमारा प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज जो हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। तो आज के सेशन में पहला चीज तो हम लोग वो देखेंगे ये इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो मैं लास्ट में एक यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं इंस्टॉल करने का, मतलब सेशन कंप्लीट होने के बाद। अगर जिसका हो गया तो फिर बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर आप लोग ट्राई कर सकते हो। और फिर हम लोग थोड़ा देखेंगे पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ठीक है, उसका एक थोड़ा समरी, और फिर पाएंगे। और फिर आज से ही हम लोग थोड़ा पाइथन का जो बेसिक्स है, मतलब जो बेसिक सिंटैक्स है, मतलब थोड़ा कोडिंग, जैसे यू कैन प्रिंट योर नेम यूजिंग पाइथन, यू कैन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर यूजिंग पाइथन, you can perform some arithmetic operations using python. So in today's session we are going to see that. So I hope I can move forward now. Okay, so first step to install Python is that you need to visit this website from your PC or PC or laptop. Okay, so I will share the link of the site. I will share the link over chat too. Okay. ओके, यू कैन गाइस विजिट दिस साइट। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल रहा है तो आप लोग बस ये गूगल पे जो भी आपका ब्राउजर है वहां पे ये टाइप करो डाउनलोड पाइथन, तो ये आ जाएगा ऊपर में। तो ये जो फर्स्ट लिंक ऊपर में ओपन हो रहा, ब्राउज हो रहा, ये टाइप करने में डाउनलोड पाइथन, ये लिंक पे आप लोग को जाना है डाउनलोड करने के लिए। सो आर यू ऑल विथ मी? Okay, so this is the first step you need to do. You need to visit this site.
This is the official Python website from where you can download any releases. But we will be using the latest release 3.9.5, or the you can also download 3.8 or 3.7 as per you. Okay, so secondly, I have the Python installed in my PC. So if you don't have Python downloaded, you can download from here button and the download will start. Okay, so sorry. So this is the first thing you need to do to install Python, that you need to visit the website, and once you have downloaded the Python, you can double click over the downloaded file and you will be given this installer, installer windows. So have you all downloaded it? अब लगता है सभी का हो गया होगा पाइथन डाउनलोड। तो फिर जो भी फाइल डाउनलोड हुआ हुआ है, जो भी जो पाथ है डाउनलोड्स मेन्यू में, वहां पे जाके वो जो फाइल है उस पर डबल क्लिक करो तो ये मेन्यू, ये विंडोज आपका ओपन होगा, ये पीसीएल ऐप पीसी पे। So once you have ran this file, you will run the executable installer. Okay. And once you have run this, then you can open the Windows command prompt, और वहां पे आप लोग चेक कर सकते हो पाइथन टाइप करके, ये आपका अगर आ रहा तो आपका ये पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है आपके पीसी में। इंस्टॉल आफ्टर रनिंग दिस इंस्टॉलर, once this is completed successfully, you need to open the command line and type Python, simple, just Python. And if you are getting this specific message that Python version and your user details, then the Python has been successfully installed in your PC. Okay, so most of the student have already downloaded and installed, so I can move forward. और जिनका नहीं भी हुआ है, मैं सेशन के लास्ट में वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब वीडियो का, आप वहां से देखकर आज ही इंस्टॉल कर सकते हो सेशन के बाद। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। सो पाइथन जो है उसके साथ एक, मतलब जैसे पाइथन जो है स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके उसके हेल्प के थ्रू हम लोग बहुत कुछ का डेवलपमेंट करते हैं, बस गेम का ही नहीं करते। वी कैन डेवलप वेबसाइट्स, वी कैन डेवलप any other software to simplify our task. So Python के साथ एक installer आता है pip. So you also need to check that whether pip is installed with the Python or not you have downloaded. So you can in the command line type this command pip3-v. So this will show the version of the pip install if it's successfully installed along with the Python. See, as you can see over my screen, मैंने अपना कमांड लाइन ओपन किया हुआ है, तो मेरे में पिप जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल है, और फिर मैंने pip3-v डाला है, तो यहाँ पे पाइथन ये जो पिप का वर्जन है वो यहाँ पे शो कर रहा है।
So some of the students might have installed and some of the students might have not. Okay, so we can move forward now. So you can see I have typed pip3-v. It shows the pip package version if it's installed successfully. Hello. Okay, now if you have checked if the Python and pip have been installed successfully, we can move forward and install pip pygame package using the command pip3 install pygame. I will just type down this command over chat box. You can use. I think now we can move forward, students. If you haven't installed, then don't worry. Okay, so I will share a link at the end of the session, a YouTube video link. You can install from there. I think from there you can try installing. Let's move forward. So now we are going to see a brief about Python. Okay, so what is Python and why we are using this programming language for our session. Okay, and the other uses also Python that is used by most of the software developers. Why they uses Python. So it's a open, first thing is that it's a open source programming language. तो ऐसा है जैसे भी आपको Python इंस्टॉल करना रहा, आपको अभी कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये जिसका जो ऑफिशियल साइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोग विंडोज पीसी यूज कर रहे हो, तो अगर आपको विंडोज का ऑफिशियल वर्जन लेना पड़ा तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। पर ये जो है ये तो ओपन सोर्स है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है। मतलब ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको मेंटेन करने के लिए मतलब जो भी पब्लिसिटी पब्लिकली जो है इसका पैकेज और जो भी कोड्स वगैरह है वो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो इसके कोड्स हैं वो प्राइवेट है। अगर आपको इसके कोड्स देखने हैं तो वो भी आप जाके साइट पे देख सकते हो, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल गिटहब रेपो का साइट है वहां पे आप जाके इसके कोड्स भी देख सकते हो। तो सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इट्स फ्रीली अवेलेबल। The second thing is that it's very easy to learn. Okay, so जब हम लोग अभी कुछ बेसिक एग्जांपल देखेंगे पाइथन का तो फिर आप लोगों को पता चलेगा सीखना कितना इजी है। आई मीन जस्ट यू नीड टू यूज द सिंपल इंग्लिश इन दिस लैंग्वेज। ओके, जस्ट इफ यू विल टाइप प्रिंट माय नेम देन इट विल प्रिंट योर नेम। If you will type 2 plus 3, so it will give the result of 2 plus 3. So you will see that how this language is so easy to learn. Okay, so basically जो भी ऐसे start करते हैं ना प्रोग्रामिंग, या तो पाइथन से स्टार्ट करते हैं या तो सी से स्टार्ट करते हैं। So it's your choice. Either you can start with Python or you can start with C. Okay, so it's easy to learn. So this is the also reason that we have chosen Python for this session. Okay, आप लोग को एक बार पता चल गया कोडिंग का कैसे थोड़ा सेंस और एक बार व्यू पता चल गया तो फिर आप लोग तो कोई भी लैंग्वेज पे शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि ना कोडिंग में कैसे लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। बस जो सिंटैक्स है वो डिफर करता है और फिर जो यूजेस है लैंग्वेज का, जैसे फंक्शन सारे लैंग्वेज में, क्लास सारे लैंग्वेज में है। तो ये जो मतलब जो हर एक लैंग्वेज का जो कह लो इनर एलिमेंट्स है वो सारे लैंग्वेज का सेम रहता, बस सिंटैक्स डिफर करता है। तो बस आप एक बार सिंटैक्स याद रखोगे तो आपने आज पाइथन सीख लिया तो कल आप सी प्लस प्लस भी सीख सकते हो, पर कभी फिर अगर आपको जरूरत पड़ा तो जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हो। सो इट्स अपॉन यू। सो it's good to start with Python because it's easy to learn and you can also gain some interest. Okay, so we can do this with Python and we can develop a game, we can develop a website. So this is why we have chosen Python in this session. So the uses of Python is just not used to develop games. We can also use to develop websites. So
कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, तो उसका जो बैकएंड है, मतलब वेबसाइट का फ्रंट एंड रहता है और बैकएंड, मतलब जो भी आप लोग टाइप वगैरह करते हैं या जो भी डेटा आपका रहता है वो बैकएंड में स्टोर होता है। जो बैकएंड जो कभी भी हम लोग लिखते हैं ना, तो वो पाइथन में लिख सकते हैं एज एज अ वेब डेवलपमेंट। इट्स यूज इन मशीन लर्निंग, सो मशीन लर्निंग इज अ sort of fill in the software development that Python is broadly used. Python से जितने भी machine learning के algorithm सारा Python से ही implement होते हैं. And the last thing, you already know that it's used in game development. So we are also going to develop game at the end of the session. I mean, in the 15 days, I will be developing a game along with you. And at the end of 15 days, what you will learn from this session, you are going to use all those concepts to develop a simple game, or you can alter this game also. So this is the all about Python. So why I have chosen Python? What's the, I mean, the significance of Python in the real world? Why people love Python? You know, people, I think that 70 to 80% programmers know because they either start their programming journey
अबे यार ऐसे कॉल करेंगे तो कैसे? Okay, sorry student, there was some network problem. Now we can start from where we left. Okay. यार ये वीडियो का तो क्या प्रॉब्लम? Okay, so we can start now. Sorry, there was some network problem. Okay, so we can start from where we left. So we were talking about syntax. The syntax is simple. You can say that it's the rule of any programming language. Okay, so you have any programming language. For example, there are different programming languages, C, C++ and Python. So उसके जो rules है, जैसे अगर हम लोग को कुछ print करना है, ठीक है, अगर हम लोग कोई arithmetic operations करना है, so तो वो programming language के जो rules है उसे हम लोग सिंटेक्स कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट पाइथन एंड व्हाई वी आर यूजिंग पाइथन इन दिस सेशन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो पाइथन के बारे में तो पता चल गया, पर अब हम लोग पाई गेम भी यूज करने वाले हैं इसमें गेम डेवलप करने में. ठीक है, तो सो पाई गेम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं. ठीक है, पाई गेम जैसे जैसे मैंने बताया, ठीक है, पाइथन बस गेम डेवलप करने के लिए यूज नहीं होता है. पाइथन वेबसाइट बनाने के लिए भी यूज होता है, पाइथन मशीन लर्निंग में भी यूज होता है, और पाइथन के बहुत सारे यूजेज है. मतलब अगर कोई टास्क है, जैसे आपको वेबसाइट से कुछ कॉपी करना है या कोई फाइल आपको ट्रांसफर करना है, 1000 फाइल से सबको आपको रीनेम करना है, उसके लिए हम लोग पाइथन की हेल्प से कुछ कोड लिख सकते हैं. तो वैसे ही मतलब जैसे पाइथन का बहुत सारा यूजेस है, तो पाइथन के जैसे स्पेसिफिक यूज के लिए एक सेट ऑफ मॉड्यूल्स बना दिया गया है. जैसे अब जो गेम डेवलप करने के लिए जो जो जरूरत है, ठीक है, जो जो चीज जरूरत है उसको अलग करके उसका एक सेट ऑफ मॉड्यूल्स को पैक एज अ फॉर्म ऑफ पैकेज कन्वर्ट करके दे हैव कॉल्ड इट एज अ दिस पैकेज एज अ पाई गेम. सो पाई गेम इज बेसिकली यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गेम. ओके, सो पाईगेम जो पैकेज है उसमें बेसिकली वी हैव द कंप्यूटर ग्राफिक्स, द ऑडियो. बिकॉज फॉर एग्जांपल व्हेन यू डेवलप अ गेम, सो व्हाट वी नीड, सो यू आल्सो नीड, फॉर फर्स्ट यू नीड द गुड कंप्यूटर ग्राफिक्स, then you need audio facilities and also other stuff such as you need other elements such as, अगर हो सकता है आपको गेम में कुछ ऐसा ग्राफिक्स जैसे मल्टीप्लेयर डेवलप करना है तो ब्लूटूथ का यूज करना पड़े. जैसे अगर आपको जैसे डेवलप करना है दैट यू कैन पेयर अप विद योर फेसबुक फ्रेंड्स, तो आपको फेसबुक से कनेक्ट करना पड़े गेम. सो ये जो भी सारी चीजें हैं जो गेम डेवलप करने यूज होते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे पाई गेम फ्रेमवर्क में पैकेज पैक्ड किया हुआ है. तो आप लोग जब कॉम्प्लेक्स गेम डेवलप करें तो वो आपको जरूरत पड़ेगा, पर अभी हम लोग जैसे सिंपल गेम ये डेवलप करने वाले इस सेशन में, तो बस उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स और ऑडियो का जरूरत पड़े और ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पाइथन एंड द पाईगेम फ्रेमवर्क. सो लेट्स मूव नाउ फर्दर. Now let's move further. Now we will do some Python programming. Okay, so I hope इसके लिए आप सब लोग एक्साइटेड होंगे और इसी का आप लोग वेट कर रहे होंगे कि आप लोग कुछ कोडिंग करके ट्राई कर सके. पर किसी के माइंड में ये भी चल रहा होगा मेरा तो पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो मैं आज के सेशन में कैसे करूंगी कोडिंग जो बेसिक्स है. तो अगर आपका पाइथन इंस्टॉल नहीं भी हुआ है तो आप अपना बस ब्राउजर ओपन कर दो. ठीक है, तो ये ऐसे ऑनलाइन आईडी भी बहुत सारे रहते हैं, तो मैं एक ऑनलाइन आईडी का नेम आपको बता रहा. बस आप ये ऑनलाइन आईडी पे जाओ, ideon.com, and from here you can move to the Python ID one. So you will get a link over chat. Okay, so अगर आपका पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ है तो आप लोग ये साइट विजिट कर सकते हो और मेरे साथ अभी कोडिंग कर सकते हो. जो भी मैं बेसिक्स कोडिंग का करूंगा वो आप लोग मेरे साथ साथ कर सकते हो.
अगर आपका अब तक पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ और पाइथन इंस्टॉल हुआ तो फिर आप पाइथन का आईडी यूज कर सकते हो। So you will get the link over the chat. Just wait for a few minutes and then we'll start some of the basics of Python programming. So do you all got the link? So आप लोग को जो लिंक शेयर किया हुआ वो लिंक आप लोग ओपन कर लो ideon.com. So from here you can use the online Python, I mean ID. And if you haven't installed Python in your PC for now, we can use this. And you can also do the programming along with me. So have you all, I mean, opened that site? Just let me know over chat. Okay, so I can move forward. If you have opened that site, okay, just let me know over chat so we can move forward. और आप सभी ने ये साइट ओपन कर लिया हुआ है तो एक बार चैट पे बता दो तो फिर हम लोग अब स्टार्ट कर सकते कोडिंग यूजिंग पाइथन। Yeah, so I can get reply from most of the students. They have just opened that link. Here you can go to the language here written over Java and select Python 3 from here. एक बार आप सभी ने वो लिंक ओपन कर लिया तो वहां पे जो ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है वहां पे जाके आप एक बार पाइथन 3 सेलेक्ट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
Yeah. So I can get most of the reply as Python 3 selected. So I think we can move forward now. तो आप सभी ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड देख रहे होंगे, यहाँ पे एक है योर कोड गोज ओवर हियर और उसके सामने है ये हैशटैग. So I can get most of the. Okay, so this is the first line of code and this is known as the comment in a Python. ठीक है. So if you want to comment anything in your code, so you can just add and just write a comment that let's begin with Python. And whenever you need to execute something, then you can click over here as a run and this code will be executed. Okay, so this is the first thing. If you need to comment something, then you can use hashtag in the front of that. Okay, so that will be counted as a comment in the Python. So generally we add comments. For example, जैसे आपने कुछ लिखा है, ठीक है, कोड्स, तो वो तो आपको समझ रहा कि जैसे आपने ये कोड लिखा है 10 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उसका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, पर जो अगर कोई और कोड पढ़ने वाला है, ठीक है, तो उसको ऐसे पता चले कि ये जो कोड लिखा है वो क्या करने वाला है, तो उसके लिए हम लोग कमेंट्स यूज करते हैं. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग उसके लिए कमेंट्स यूज करते हैं. So just I will do full screen. Okay, so now I think it's fine. Okay, now we will do the first thing. Let's print the print your name in Python. अगर आपको पाइथन में जैसे कुछ भी प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल योर नेम और एनी योर teacher's name or your school name or your address, okay, so just you can use print statement, print, and under that you can use as double quoted comma and you can write your name. For example, if I write my own name, that Deepak Kumar, and you can simply type that over your PC, and then again you can click at ideon.it as done, and here you can see as the output of the code. So how many students have executed the first line of the code? They have printed their name. Can you know me? Can you let me know over the comments in the chat box? Okay, I got one reply. Anyone more? सिंपल, अगर किसी का नहीं हो रहा है तो बस यहाँ पे आपको अगर कोई भी चीज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट करना है, देन यू कैन यूज द प्रिंट एंड अंडर दैट, under double quoted comma, you can write the thing you need to print. It's not just the name. If you want to print that this is day 2 of the session, then you can again change the, I mean the statement under the print statement, and you can again run the code and you will see the output. The output has been changed. This is day 2 of the coding session. So using the print statement, just can you print your name, your school, and your address? Just a small task for you. So you can practice the print statement.
Okay, so most of the student is saying to repeat all the things. So if you have opened this site as ideon.com, यहाँ पे आप लोग को Python 3 लैंग्वेज सेलेक्ट करना है. उसके बाद हम लोग जो Python का फर्स्ट जो थिंग है वो हम लोग देख रहे हैं कि हाउ टू प्रिंट एनीथिंग इन पाइथन. अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल अपना नेम प्रिंट करना है या अपना स्कूल नेम प्रिंट करना है या अपना एड्रेस प्रिंट करना है तो हम लोग पाइथन में कैसे प्रिंट कर सकते हैं. तो उसके लिए पाइथन में एक वर्ड है प्रिंट, ठीक है. और फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट देना है और जो फिर डबल कोट कॉमा देना और उसके अंदर आप जो भी लिखोगे तो वो आपका पाइथन में प्रिंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल यू कैन ट्राई प्रिंटिंग योर नेम फर्स्ट as print under inverted comma your name. Okay, else you can also try changing the statement that as I have written right now, this is day 2 of the coding session. So this is what I have just given a brief start of the Python. Okay, so this is the basic thing one everyone learns when they start with Python, how to print anything in Python. Because यहाँ पे आपको लग रहा है कि बस ये छोटा सा चीज सीख के मैं क्या करूंगा, पर ऐसा नहीं है. पाइथन का आप लोग जब आप लोग आगे देखोगे तो प्रिंट स्टेटमेंट बहुत जगह यूज होता है. अगर आप जैसे कोड करते रहोगे ना आपको कोई एरर आ जाएगा तो प्रिंट स्टेटमेंट सबसे ज्यादा यूजफुल है कि वो एरर किस लाइन ऑफ कोड में या कौन से फंक्शन में वो डिबग करने के लिए. सो कैन यू ट्राई दिस स्मॉल टास्क, प्रिंट योर नेम, स्कूल नेम एंड एड्रेस इन पाइथन. इफ यू हैव कंप्लीटेड इट जस्ट राइट ओवर द चैट बॉक्स एज डन. प्रिंट योर नेम, स्कूल नेम एंड एड्रेस इन पाइथन. Okay, so this was the first thing. As to print anything, you need to use the print statement. So now see the second thing, that how we can perform any arithmetic operations. So the arithmetic operations basically वही subtraction, addition, division, multiplication. So how we can perform that in Python? हमें तो आता है 2 into 3 6 होता है, पर कंप्यूटर कैसे करेगा वो आज देखने वाले हैं. So for example, you can take two numbers. Okay, so I have name as num1 equal to 5, num2 equal to 10, and you can see take it as a third variable result equal to num1 into, I mean sorry, addition we are saying now, num1 plus num2, and then simple print result. See, you will get the output as 10, I mean sorry 15. So ये हमारा first thing था, print हुआ. This is the day 2 of the coding session, and then we have performed our first arithmetic operations as addition. Number 1 equal to 5, number 2 equal to 10, and result equal to number 1 plus number 2. As simple we do in the maths. And then we need to just print the result, and you will get the output here as 15. So can you perform the first arithmetic operation as addition? You can let me know in the comments. Have you executed the code successfully and got the output as 15? Any comments? Anyone? Okay, I got one reply. One of the student got the output as 15. सो जिसका नहीं हुआ बस सिंपल है, दो वेरिएबल लो, नंबर 1 इक्वल टू 5, कोई भी नंबर आप ले सकते हो. मैंने 5 और 10 लिया है. नंबर 2 इक्वल टू 10 एंड रिजल्ट इक्वल टू दोनों का एडिशन, जैसे आप मैथ्स में करते हो
एक आप वेरिएबल लेते हो कि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c, सिंपल एज मैथ्स. ओके सो ट्राई, लेट्स ट्राई सम लार्ज नंबर. ओके सो जिसका एडिशन आप लोग नहीं कर सकते 1 सेकेंड के अंदर. ट्राई एनीथिंग एंड सी हाउ मेनी टाइम इट टेक्स टू एग्जीक्यूट द code and calculate the results. Just use any large digit number, 10 to 15 digit, और देखो कितना टाइम लगता है. Using just 10 to 15 digit number as average. See, you got the result in 0.02 second. Okay, I think I have zoomed my screen now. It should be clearly visible to you all. Sorry. So let's try out with the large number. How many students did that? Did you got the answer? You can take any 10 to 15 digit random number and you can see how many seconds it took to display the result. 0.02 second. So any more students who have tried that? They have considered two large number and they tried performing the addition of that number. Okay, done. I think some of, I mean 5 to 10 students are doing pretty well. आप लोग भी ट्राई करो जो ट्राई नहीं कर रहे हैं. अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये साइट पे जा सकते हो और यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो पाइथन 3. Okay, sir, when I'm clicking Python, nothing is coming. Just wait for a few seconds, okay? It will come. Maybe it's still executing. It depends on your internet speed. Okay, so this was the first arithmetic operation as addition, what I did. So let's try subtraction, okay? So just we'll change the sign over here and I will change the comment also that we have tried at addition and subtraction. And let's do num1 minus num2 and done. Yeah, so this was the answer. I think one of the students have added the answer. But if you do it manually, I think it will take few minutes for you to do that addition manually. So this is why we use programming, you know, to simplify our task and to save a lot of time. So let's try subtraction. Okay, you can try subtraction with the same number or change the number as per your wish. So done with subtraction, can you let me know in the comments if you're done with subtraction? We can move forward then. कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी जो आपको मन हो करने का वो आप ट्राई कर सकते हो. मैंने बस आपको दिखाया एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके. बस जो जिस तरह से करते, यू नो द सिंटैक्स, the rules to perform any operation or to print anything will be same in all the case, whether you are performing addition, whether you are performing subtraction, whether you are performing multiplication, or whether you're performing division. The syntax will be same. You can simply, I mean, think of syntax as the rules. It is showing error. Yeah, you can try negative number, positive number, everything. Python will take care of that.
So this is just, I mean, I have given a brief overview. Okay, so this is how you can use the Python for printing anything and performing any arithmetic operations. So after the session ends, you can try other things also with this programming language. You can try calculating average of the 5 number. You can try calculating percentage in Python. So you can try number of things. But यही है कि बस आप लोग तो ट्राई करना सेशन के बाद, ये नहीं कि बस सेशन खत्म हुआ फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं. Because we are going to use all this stuff in next session after few days when we are going to develop the game. Okay, so this was all about the arithmetic operations. Let's move to find the minimum and maximum in Python. How we can do that? So we can again consider two number as, for example, a equal to 190, b equal to 120, and result equal to. If we want to calculate minimum, okay, so we will just use this function as max, and inside that we will write a comma b. So this is the rule to calculate maximum of two numbers. So you can use result maximum, and again you can use result minimum equal to, just use mean and minimum of two numbers, minimum of a comma b, and then you can just print the result. Simple. Print result max, print result mean. So you can type down the code. It's simple. Just we are trying to find the maximum and minimum of two numbers, and then you can run the code and you will see the result. Okay. So the maximum was the 190 and the minimum was 120 of two numbers. So can we use list method in minimum? Yeah, if you are familiar with list, we can use list. There are some Python, I mean, data holders as list, sets, and tuples. We can use that, but that's a bit advanced concept. I'll just use list. Okay, so if you want to find minimum between 5 to 10 numbers, so it's not like you are going to consider 10 variables as a equal to b, c equal to this. So we can consider a list such as that numbers. Okay, let's this be numbers equal to, दिस इज लिस्ट. अगर आपको कोई चीज का लिस्ट कंसीडर करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है. और इसके अंदर आप लोग डाल सकते हो कितने भी नंबर्स. फॉर एग्जांपल आई विल ऐड 5 नंबर्स फॉर नाउ. 560. Okay, so and I will print again minimum of list. So I here I want to print minimum of all these numbers. So this is a list of numbers and we want to print minimum of all this or maximum of all this. So we'll just use print max of numbers, and simply for the minimum also we'll print mean of numbers, and then again just run the code. So see, the maximum was 654838 and it got printed, and the minimum was 100, it got printed. So how many students have done all these three things we did today in Python? How we can print anything in Python, how we can perform arithmetic operations, and how we can find the minimum and number of two numbers and a list of numbers. So how many students have done that today? So your code was executed successfully.
So are you able to find the minimum of the list and the maximum of the list? Please let me know in the comments by typing yes. Any of you who was able to find the minimum maximum? Okay, so this was all about today's session. So today we have seen how to install Python, okay, and how to install Pygame. What's Python? Why we are using Python for this session? What is Pygame? And then we saw some basic stuff in the Python programming language as how to print anything in Python, how to perform arithmetic operations in Python, and how to find minimum and maximum number in Python. Either you can find minimum maximum of 2 or you can find bit of a list of numbers. So this list can be of size 100 also. It's not like just you need 5 to 10 numbers because there's not a range of any list. So for who's getting runtime error, okay, so there might be some error in your code. Just see what I've written over here. अगर आपने हो सकता है या तो कॉमा ज्यादा डाल दिया हो या तो ब्रैकेट देना भूल गए हो. So एक बार चेक करो because any programming language is quite restrictive to its rules. ठीक है. अगर उसका सिंटेक्स जरा सा भी गलत होगा तो आपको एरर आएगा ही. वो जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे आपका कोड नहीं रन होने वाला. कुछ भी कर लो तो वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा. So अगर कोई डाउट है तो you can ask in the comments. I think now this was all about today's session, what I planned. Okay, so in tomorrow's session also we will see just some Python stuff. You can try installing Python. I will share the link today, or you can just use this site tomorrow also. And you can also try practicing the things what we have done in today's session. Okay. So any doubt, anyone? I think there's no doubt. So there's no doubt. So you can try practicing this what you have done in today's session, and tomorrow we will learn some more Python stuffs. Okay, and day after tomorrow then we can begin with the development of the game. So let's be prepared, and I hope that you all are enjoying the session. Okay, so okay, then let's meet tomorrow. And I will share the link of the YouTube link to download Python in your PC. It will be shared by in the Facebook page. Okay, from there you can use that link and download Python. And then if possible, I will also share some tasks you can try out at your end. Okay, so this will be the two things I will share after the session. And so I think everything is now good to go. Okay then, bye. Have a nice day.